Okay, see what is the question. The question was, Raja, could you please repeat the question? The question was, if you have received the A style, okay, if you have received the A style, okay. The question is, if you have received the A style, okay, and the faces, the vertical faces of the A style, it should be in 0.5 or it should be more than 7 degree. This is the question. Okay, see what is the question. If you have received A style, any A style like this, one like this, like this is your A style. Now tell me your MTD will be like this, yes or no? Yes, Abhishek, others, Yes, sir. Yes. this will Yes, be your sir. MTD. Now the question was, okay, someone asked in interview, someone asked to Raja, is it mandatory? Means if you have received any A style, class A surface, what should be the angle on the vertical faces? Vertical faces means vertical surfaces means this one. It should be 0.5 degree or it should be more than 7 degree. This was the question, interview question. Okay, Abhishek, clear hai? What is the Yes, question? sir. Yes. Yes. Okay. Now, see, what is the answers? Here are the answers. If surface having 7 degree draft, it will be clear in both 0.5 and 7. Okay. Yes. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा था? If you want to perform draft analysis, okay, if you want to perform the draft analysis, so let's say if these vertical faces are having 0.7 degree, and if you will perform the draft analysis, can you keep the value 7 degree? Can you check the same draft in 7 degree? Will it be clear or not? Or vice versa? If these surfaces are on 7 degree, can you perform the draft analysis on 0.5 degree? And if you're performing that draft analysis on 0.5, will it be in green color or what? Clear, Abhishek? Green color, sir. Abhishek, clear? Question समझ में आया? Yes, sir. Perfect. Now, what Akash is saying, see, if surface having 7 draft, it will be clear in both 0.5 and 7 degree analysis. But if surface having 0.5 draft, then it will be clear only in 0.5 draft analysis, now not in 7 degree draft analysis. Clear? ये आकाश का क्वेश्चन है, आंसर है. मीन्स सर, इफ दिस फेसेस आर इन 7 डिग्री, अगर आपके ये फेसेस अगर आपके 7 डिग्री में है विद रिस्पेक्ट टू एमटीडी, so you can perform the draft analysis on 0.5 as well as 7 degree. Yes or no, आकाश? यही था आपका. Yes, yes, sir. If this is on 7 degree, okay, so all surface will be in green color. Yes or no? Yes. And Yes, sir. if this faces are on 0.5 degree, so थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, ये भी 0.5 डिग्री पे. So can you perform draft analysis with 7 degree? Yes or no? ये faces आपको green दिखेगा क्या? No, sir. Simple, yes or no? No. Rahul, No, sir. what do you think? Ganesh, Rahul? No, sir. No. So that was the question and this is the answer. Okay. And yes, see, उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? If you are receiving any style, the vertical surfaces should be in 0.5 degree or should be more than 7 degree. So Raja, आपने आंसर क्या दिया था? What was the answer in interview? Sir, if there is any graining option is there in A surface, then we have to keep 5 to 7 degree. Perfect. If not there, then we can clear in 0.5 degree.
परफेक्ट, क्लियर एवरीवन, यस और नो, समझ में Yes, आया? sir. ओके, if the if the requirement on the A surface, if there is some requirement from the OEM, no, I want graining on A surface. So in that case, your all vertical surfaces of A style should be in angle more than 5 to 7 degree. Why? Because for graining, we will need 7-degree draft surface. So why? Okay, everyone knows what is graining. ग्रेनिंग क्या रहता है पता आपको? Yes, sir. सौप्तिक, आकाश, अभिषेक, अरविंद, अग्नियो, निखिल, No, ग्रेनिंग sir. ग्रेनिंग क्या रहता है पता है? नो. Yes. See, this is door panel. Can you see this upper surface, the texture? Yes or no? Yes, sir. This is graining. Okay, इसको हम graining कहते हैं. And these are the grades. Can you see different type of grainings? Yes, it depends on the Yes, grade. sir. This specification we will receive from OEM. Okay, so if you want such type of graining on our A surface means here you can see this is dashboard. ये भी dashboard पे grains है, see? Okay, so your surface should have more than 7 degree with respect to your MTD. Why? Because tell me, the graining tool will open in MTD, yes or no? The graining tool MTD Yes, sir. will open on this one. Now tell me, this is your first surface on 0.5 degree, and this is your second surface on 0.7 degree. Tell me, you want graining, you want graining on this face like this, and you want graining on this face. Tell me in which angle it is possible. The graining will be done along MTD only. ये MTD है दोनों का. Yes, this is 0.5 degree, this is 7 degree. Tell me where graining is possible. 7 degree. 7 degree. 7 degrees, sir. Okay, why? Because आपको ग्रेनिंग में वहां पे ऐसे टेक्सचर दिखाई देओगे. Yes or no? Something depression, upside, downside, yes or no? Up and down. Yes, this is graining. अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ ग्रेनिंग पे तो इट विल समथिंग लाइक दिस. Yes or no? Rough surface. Yes, sir. So if I want graining on this one, so the outer surface will be like this. 1, 2. Let me undo, reduce the size of this one, और इसका कलर रेड कर देते हैं. So graining will be like this: 1 down, 2 up, down, like this. Okay, now this side it will go down, again it will come out, it will go parallel, again it will go down, again it will come up, again it will go parallel. Are you getting my logic? Yes or no? Yes or no? Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now tell me, this tool should be open without disturbing the graining. तो ये टूल ऐसे ओपन होना चाहिए. Yes or no? If I put Yes, sir. if I put my graining like this, tell me what will happen. लॉक होगा सर, टूल प्रॉपर से डिटैच नहीं होगा. हाँ, so ये पूरा ग्रेनिंग डैमेज कर देगा वर्टिकल फेस पे. Yes or no? Yes, sir. So that's why that face should be on 7 degree. Clear? Okay. Sir, I had a small doubt, sir. Yes, Abhishek. सर वो 0.5 और 7 डिग्री का बोला था, कैसा हमारा
0.5 7 डिग्री पे क्लियर होगा, मेरे को उतना समझ में नहीं आया Okay, उसका। analysis, that is draft analysis. The second question was draft analysis. तो राजा ने ये आंसर दिया, अगर सर हमारे ए सरफेस पे ग्रेनिंग है तो we will need more than 7 degree. Now the second question was draft analysis. If you want to perform draft analysis on this surface, see this is 0.5 degree. अगर इस पे अगर ये with respect to MTD अगर आप draft analysis करते हो 7 degree में, tell me this surface will be in green color और red color. ये क्लियर होगा कि नहीं होगा अगर 7 डिग्री में करते हैं? और द सेकंड क्वेश्चन इज वाइस वर्सा, अगर आपका ये 7 डिग्री में है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एमटीडी इफ यू परफॉर्म द ड्राफ्ट एनालिसिस और आप 0.5 में चेक कर रहे हो, सो ये सरफेस ग्रीन रहेगा कि रेड रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन. हु इज कॉन्फिडेंट? हु इज कॉन्फिडेंट? First one red, second one green. फर्स्ट वन रेड. फर्स्ट वन में कंडीशन ये था कि आप 7 डिग्री में ड्राफ्ट एनालिसिस कर रहे हो. यस आकाश. Yes, sir. एंड सेकंड केस में आप 0.5 डिग्री में ड्राफ्ट एनालिसिस कर रहे हो. Yes, sir. Akash, you are confident? Yes, sir. Okay. Agnew, Yes, sir. same like Akash? Yes. ड्राफ्ट Ganesh? एनालिसिस का हाँ. जो एंगल गिवन होगा हम्म. उससे लोअर एंगल पर क्लियर हो जाएगा, पर उससे ज़्यादा एंगल पर क्लियर नहीं होगा Okay. एनी केस। Okay. Good logic. Ganesh? सेम सर, सेम लॉजिक। Nikhil? Sir, same, sir. Raja? Rahul? इस 7 में क्लियर हो रहा है तो 0.5 में क्लियर हो जाएगा सर. Okay. Rahul? Soptik? सर ये मतलब ये सेशन ये रिकॉर्ड हुआ हाँ. था क्या? Yeah, this is in recording. Yes. सर एक्चुअली वो थोड़ा गेस्ट आए थे इसलिए No issue, वो no issue, no issue. वैसे भी ये न्यू यस टॉपिक है आपके लिए, नो इशू. सचिन, यस सुभजीत? सर बोट विल बी ग्रीन। सर दोनों में क्लियर होगा। दोनों में क्लियर होगा. सी दिस इज 0.5 डिग्री ड्राफ्ट. अगर आप 7 डिग्री में ड्राफ्ट एनालिसिस करते हो इसका, सो ये यस फेस आपको ग्रीन मिलेगा कि रेड मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन. सर, ग्रीन मिलेगा सर। 7 डिग्री में अगर ड्राफ्ट एनालिसिस करते हो तो यस ओके. लेट्स डू वन थिंग. ओके सुभजीत, थोड़ा सा टाइम निकाल के एक काम कीजिए. ओके लेट्स, मतलब आई डोंट नो मीन्स हो सकता है. लेट्स डू वन थिंग. ऐसा एक 3D बनाइए, क्यूब. ओके, दो 3D बनाए ऐसे, दिस वन एंड दिस वन. ओके, MTD विल बी कॉमन, एक ही MTD रहेगा. दो ब्लॉक बनाइए, स्केच निकाल के पैड कीजिए एंड जस्ट अप्लाई. एवरीवन please do this assignment. Just apply 0.5 degree on all four faces of this cube like this and apply 7 degree like this. Okay, और जिस पे आपने 7 डिग्री अप्लाई किया है उसको ड्राफ्ट एनालिसिस करते वक्त 0.5 पे कीजिए. ओके. सर 0.5 में 7 डिग्री का क्लियर नहीं होगा। ओके, इसको आपको ड्राफ्ट एनालिसिस करना है सर 0.5. ऑलरेडी किया हुआ है सर। आपने किया है, गुड. सो हाँ, आपने स्क्रीनशॉट स्क्रीन डालना चाहिए था. हाँ अग्नि स्क्रीनशॉट दिया है सर। दिया आपने? ओके. हाँ सो इसको आप भूल ड्राफ्ट गया था एनालिसिस सर। कीजिए एंड इसको आप ड्राफ्ट एनालिसिस कीजिए 7 डिग्री में, फिर आपको आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके. मेरा एक लोकेटर था उस पर किया है सर। ओके, उस पर कर दिया डायरेक्ट. ओके, आपने स्क्रीनशॉट डाला? हाँ सर डाला, पहले भूल गया था सॉरी। नो इशू. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसका तो भी स्क्रीनशॉट आएगा. सी, ये क्लियर हो जाएगा अभी. ये किया है इन्होंने 0. ओके, 0 डिग्री दिख रहा है बिकॉज ड्राफ्ट वो कर रहे हैं 6.98 पे. बाद में फेसेस, दिस इज 7 डिग्री ना अग्नियो? नो सर, परफेक्ट 7 डिग्री नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं ड्राफ्ट जिसका दे रहा हूँ उससे ज़्यादा में होता भी है हाँ क्या हाँ हाँ, नहीं। यस. ओके. एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन? इससे क्या सीखे, मतलब आप कंक्लूजन वाज? मैं
बॉडी में जिसका ड्राफ्ट दे रहा हूँ जिस एंगल का, हम्म, उससे ज़्यादा का नहीं हो रहा है ड्राफ्ट एनालिसिस में, उससे कम perfect. का हो जा रहा है। Good. Simple logic. Simple है. See, what is the minimum requirement for the draft? Minimum angle. Standard. 0.5। 0.5. Yes or no? Ganesh, everyone, Subhajit, Sachin. यस Yes. सर। Yes. 0.5 draft is minimum requirement for the vertical faces. हम draft analysis किस पे करते हैं? 0.48। 0.48. Why? Because if you Minimum perform the 0.5. draft analysis on 0.5, what will happen? अगर 0.5 पे करते हैं तो क्या होगा? 0। 0 डिग्री दिखाएगा वो. Okay, their all vertical faces will be in blue color. That's why if the angle is larger and if you're performing the draft analysis on the lower value than that draft value, it will be in green color. Clear? Clear है, यस simple सर। है. सर वही मैंने डाला था ना वो प्रूफ पे। हाँ, नहीं नहीं वो डाला था आपने, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, दैट्स वाई. हाँ। ओके, सो ये आई थिंक आकाश ने भी बराबर डाला है. इट विल बी क्लियर. यस, यहाँ पे 7 डिग्री नहीं रहना चाहिए, 6.98 रहना चाहिए. ओके आकाश, Yes, sir. Yes. 7 Lower डिग्री में mid. वो न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, Yes. परफेक्ट, ये आंसर बराबर है. जितेंद्र इज सेइंग इफ सरफेस क्लियर इट इज मैंडेटरी टू क्लियर. ओके, कैनॉट बी क्लियर इन 7 डिग्री. हाँ, वी कैनॉट बी श्योर. हाँ, दिस इज रॉन्ग, यू शुड बी श्योर. ओके, गुड. और किसी ने डाला है? मैं ओके, डन, इतने ही थे. ओके, परफेक्ट. ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप द सेशन. Raja, any other doubts? No, sir. Perfect. So let's stop the session. Okay, and please focus on your assignments, rewatch the recordings. Okay, see you in next session. Thank you, bye, good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night all. गुड नाइट सर।